Assalamu alaikum. Today's lecture is a continuation of our previous lecture on Hegel's lecture on fine arts. So the title of this part of the lecture is revisiting the role of talent, genius, and technique in artistic creation, a historical perspective. It means that in this lecture, actually, what Hegel does is, first of all, he takes a uh, historical review of the concept of art. So let's start from here. Change in the way people view art. So from this we can understand that the definition of art, it has, you can say, changed. In the past, art was something. The definition of art was different from the definition of art in the present time. Hegel says that the way people view art in the present is different from the way they used to in the past. In the past, art was seen as the result of human effort, general human effort. In the present time, however, art is considered that it is something to be the, you can say, creation of somebody who is a gifted person and who has some unique abilities. So there is a difference between the definition of art in the past and in the present. So talent and genius. What is talent and genius? Talent and is seen as a specific skill, while genius is considered as universal ability that people cannot simply develop on their own. This viewpoint suggests that artists should work without being aware of their own actions, as consciousness can harm the purity of their creation. It means that when artists, when they have embarked upon a journey to create a work of art, what they need to do is that they have to be aware of their, you can say, external surroundings, or they have to be unaware of, you can say, their own action, so that they may be able to concentrate fully upon the thing that they are going to create. So you can say that talent and genius, they are very important, because when an artist creates a work of art, talent and genius, they actually have gone into that. So here he talks about period of genius, Goethe and Schiller. So these are the poets, and Hegel talks about them. Hegel says that this idea became popular in Germany during the period that is called period of genius, initiated by Goethe and sustained by Schiller. Actually, these were two figures, and they were primarily known for their deviation from the established rules, and they were also believed to be able to create outstanding works. So this means that in the very when we studied the first part of this lecture, there he says that Hegel says that mechanistic approach to art, it is not a good way to create a good work of art. So here you can say he reinforces, or he, you can say, he endorses his point of view by saying that art is something that is not, you can say, that is not subject to mere imitation of the mere imitation of the mechanistic rules, because merely by following those rules and the principles, you cannot be able to create a good work of art until your own emotions, your own depth of expression have gone into that work of art. So artistic production and technical aspects. Hegel argues that while there is a natural element to talent and genius, and he is of the opinion that talent and genius, these are the natural elements, but these natural elements, they actually need development. And if in order to develop these natural elements, what the artist needs to do is to reflect, is to practice, and you can say he should also be using skill, because if he has been blessed with these talents and he is not using these talents, you would say that these talents and genius, they would become like the stagnant water. So this means that this is practice, reflection, and skill, they are very important in order to enhance the development of the intellectual activity. For I can give you an example. For example, if somebody has a natural talent and genius of writing poetry, and he does not use that talent at all, so this means that his talent will become stagnant, and it would be of no use at all. So in order to enhance his talent, in order to develop his talent, what the poet needs to do is that he has to practice, and he has to reflect, and he has to develop his thought as well.
Then skill in technique is not driven by inspiration but by reflection, hard work, and practice. So this means that Hegel actually here, you can say, talk about the importance of hard work, reflection, and practice in the creation of a work of art, or you can say of an artistic creation. So depth of expression in art, spiritual activity. In the first part of the lecture, he says that art is a spiritual activity. Art is a result of spiritual activity. So this means that art does not mean merely following the rules and the traditions and the principle that have been, you can say, that have come down to us. But art means the depth of expression in human expression of spiritual activity. Furthermore, the more skilled and accomplished an artist is, the more they must express the depth of the emotions and thoughts in their work. अब जैसे देखें कि हमने एक पोइम आपने पढ़ी थी इन योर सेकंड सेमेस्टर, वो पोइम थी माई लास्ट टचेस. दिस वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. अब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने देखे कि उसने जो ड्यूक होता है, ड्यूक एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कर रहा होता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के ज़रिए वो अपने करेक्टर को रिवील कर रहा होता है, ठीक है. तो आप इसमें देखें कि वो जब उस तस्वीर को देखता है, यानी उस पेंटिंग को देखता है, तो वो किस तरीके से यानी उस तस्वीर को देखने से उसका अपना जो शकीपन होता है, उसका अपना एक मतलब जो एक एलिमेंट होता है सस्पिशन का, वो वाज़ह होता है, ठीक है. फिर वो देखे इस तरह वो शक करता है, वो कहता है कि जब ये फ्रा पेंडुलफ था, जब वो इसकी पेंटिंग को पेंट कर रहा था, तो उसके असल में अपने इमोशन इसके अंदर जा चुके हैं. तो अब यहाँ से ये बात एक वाज़ह होती है कि जो आर्ट होती है, आर्ट एक डेप्थ ऑफ एक्सप्रेशन होता है. आर्ट मेयरली जो होता है ना स्टिकिंग टू रूल नहीं होता, ठीक है. अगर हम सिर्फ आर्ट में रूल्स को स्टिक कर लें, रूल्स को हम लगे रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. अब इसमें दूसरे ये जो पार्ट है, इसके अंदर सादा सी बातें बताई गई, इसमें इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं है. इसके अंदर मेन आइडिया उसने पहले में बता दिया है. इसमें यही बात की गई है कि जीनियस एंड टैलेंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो लेकिन उनको भी डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. नहीं तो अनटिल अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे ना. तो ये इसमें उन्होंने बातें करने की कोशिश की है. तो आगे कहते हैं स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ आर्ट, हेगल्स पर्सपेक्टिव ऑन द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन क्रिएशन एंड डिवाइन प्रेजेंस, ठीक है. यहाँ हेगल जो होता है, हेगल असल में जो स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ आर्ट होता है ना, यानी इसका जो एक डिवाइन एस्पेक्ट होता है, उसको बताने की कोशिश करता है. अब इसमें देखिए, इसमें पहला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है और आर्ट, उनके दरमियान व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ये डिस्कस करेगा. अब इसको देखने कैसे करता है. कंपैरिजन ऑफ आर्ट एंड नेचर. नेचर और आर्ट में क्या फ़र्क होता है. देखें, नेचर एक होता है, नेचर ने आर्ट बनाई होती है. मतलब मिसाल के तौर पे कि आपको चीज़ें नेचुरल नज़र आती हैं. यू हैव माउंटेन, यू कैन से रिवर्स, यू हैव सी, ओशन, यू कैन से ट्रीज़, बर्ड्स. तो ये सारी नेचर की जो होता है ना आर्टिस्टिक क्रिएशन है ना, ठीक है. तो अब इसमें जो नेचर की आर्टिस्टिक क्रिएशन है, उनके अंदर एक वैरायटी है, तनव्वु पाया जाता है बहुत ज़्यादा. वो एनिमेट होती हैं, ठीक है. उनके अंदर तनव्वु है, उनके अंदर मोशन होता है, वो तब्दील होती हैं, ठीक है. लेकिन वो कहते हैं जो इंसानी आर्ट होती है ना, ठीक है, ये इसके बरक्स क्या होती है कि वो इतनी इंट्रिकेट नहीं होती है, ठीक है. यानी इतनी ज़्यादा जो होता है ना कि उसके अंदर तनव्वु नहीं होता. यानी आम ये हेगल खुद अपना व्यू नहीं दे रहा. एक्चुअली व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ दैट ही इज़ पुटिंग फॉरवर्ड द व्यू ऑफ द पीपल, ठीक है. तो हेगल फर्स्ट हाईलाइट्स दैट देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑन हाउ the work of art relates to nature. People commonly believe that nature products are more valuable because they are alive and constant motion. ये अभी मैंने बात की है आपसे. While works of art are inanimate and only appear to be lifelike on the surface, ठीक है. तो अब इसमें देखें आगे वो बताता है, अगला पॉइंट देखें, स्पिरिचुअल वैल्यू. फिर इसके बाद जो कि पहले लेक्चर में भी हेगल ने पहले पार्ट में बताया कि आर्ट एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी का रिजल्ट होता है, कि आर्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी. तो कहते हैं आर्ट का जो है, हेगल आर्ग्यूज दैट व्हाट मेक्स अ वर्क ऑफ आर्ट सिग्निफिकेंट इज़ नॉट द एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस बट इट्स कनेक्शन टू द रियलम ऑफ द स्पिरिट. यानी वो स्पिरिट के साथ उसका जो तल्लक होता है, जो हम अंदर से एक मतलब आर्टिस्ट फील करता है ना, तो असल में उसका लिंक होता है. इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे देखें कि यू हैव रेड द पोएम डैफोडिल दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो वर्ड्सवर्थ की जो मतलब एक एक्सटर्नल शक्ल होगी, उसकी एक्सटर्नल जो उसकी आर्ट की फार्म होती है, जो पोएम आपके सामने उसकी जो फिज़िकल फार्म है, उसकी अहमियत इस इतनी ज़्यादा नहीं बल्कि ज़्यादा अहमियत किसकी है कि जब उसने इस वर्क ऑफ आर्ट को तश्कील दी, यानी क्रिएट किया, तो उस वक्त उसका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा ना, यानी उसने फ़ील क्या किया. जैसे फिनोमिनोलॉजी हमने ऊपर पढ़े ना, कि फिनोमिनोलॉजी यही है ना कि यानी अंदर से फील आप क्या करते हो, यार, ठीक है ना, उसका जो इजहार क्या होता है. तो अब इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यू, ठीक है.
تو یعنی اس نے جو محسوس کیا اس کی اصل میں ویلیو ہے. یہاں ایک مطلب شارٹ سٹوری رائٹر ہے جو وہ لکھتے وقت جو اس کے اپنے ایموشن اپنے جو ڈیپتھ آف ایکسپریشن کو جو وہ فیل کرتا ہے نا وہ اصل میں اس کی ویلیو ہے جو اسپرچول ویلیو آف آرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بتا رہا ہے. اب آرٹ کیا ہوتا ہے؟ آرٹ ایلیویٹڈ ہوتی ہے. ایلیویٹڈ اسٹیٹس آف آرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیگل asserts that anything spiritual is superior to product of nature. یعنی جو چیز اسپرچول ہوتی ہے نا وہ اصل میں نیچر کے پروڈکٹ سے سپیریئر ہوتی ہے. یعنی یہاں ایک بڑی خوبصورت یہ بات کرتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ جو چیز ہم انسان جو تھا نا کہ ایک اپنے اسپرٹ کے پروسیس سے ایک یعنی اسپرچول ایکسپیرینس سے گزر کے پیدا کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ نیچر کی جو بنی بنائی جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ مطلب اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں جو ہے نا ہیگل ان چیزوں کو دونوں کے اندر اتنی ڈیمارکیشن نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی کہتا ہے. آگے اس کو دیکھتے ہیں, آگے دیکھیں یہ کہتے ہیں 5واں پوائنٹ ہے کہ نیچر وی ایس ہیومن کریشن. ہاؤ ایور ہیگل ایکنالج دیٹ سم پیپل کویشچن دا ہائر اسٹیٹس آف آرٹ کمپیئر ٹو نیچر. ٹھیک ہے, یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں جو نیچر نے بنائی ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ان کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ان کے اندر تنوع زیادہ ہوتا ہے, تو جو انسانوں کی بنائی ہوتی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تنوع کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہیگل جو تھا ہیگل اس پوائنٹ کو نہیں ایگری کرتا. ہیگل یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو گاڈ نے جو خدا نے چیزیں بنائی نا, ہم اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا ان کے غلط موقف ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کام صرف جو تھا نا نیچر کی جو چیزیں ہیں وہ بنا دی ہیں تو بس وہاں تک ہی ہے, تو جو آرٹ ہوتی ہے آرٹ کے اندر گاڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اصل میں یہ اس کا جو آئیڈیا ہے نا, اس کو آئیڈیا کو فلسافیکلی اگر پڑھے پھر اس میں ہماری کافی زیادہ ڈبیٹ اس میں لمبی ہماری ہو جائے گی, تو میں اس پہ نہیں جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں ہمارے جو اسپرٹ ہے نا, آرٹ چونکہ ہمارے ایک اسپرچول ایکٹیویٹی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اسپرچول ایکٹیویٹی ہے وہ اس کا تعلق سول کے ساتھ اسپرٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جائسٹ کا کنسیپٹ, گائسٹ کا کنسیپٹ بھی اسے کہتے ہیں فلاسفی میں. ٹھیک ہے, تب وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے اس کا پھر گاڈ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. جس کا مطلب جب ایک رائٹر یا ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے جب ایک ورک آف آرٹ تشکیل دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اصل میں گاڈ کی پریزنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ گاڈ کی پریزنس صرف جو ہوتا ہے نا نیچر کی چیزوں کو بنانا نہیں ہے, بلکہ ایک اچھی آرٹ کے ورک کے اندر ایک گاڈ کی پریزنس نظر آئے گی. یعنی گاڈ جس طرح اتنا وہ لاتا ہے نا نیچر کی چیزوں میں, اس طرح آپ کو نظر آئے گا. آگے کہتے ہیں گاڈس پریزنس, جیسے دیکھیں اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہیگل کاؤنٹرس that view by asserting that God is equally present in art as well as in nature. He contends that God is more honored through what the human spirit creates because there is something divine within humanity. دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خدا نے انسان کو مطلب تشکیل پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اگر اس کا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو اگر وہ انسان جو ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی اپنی یعنی جو اسپرچول ایکسپیرینس اسپرچول ایکٹیویٹی سے گزر کے, ٹھیک ہے, جب ایک ورک آف آرٹ تشکیل دیتا ہے نا, جس کا مطلب اس سے خدا کا جو قدر و منزلت, خدا کا جو رتبہ, خدا کی جو مطلب عظمت ہوتی ہے نا, اصل میں وہی عیاں ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے, چونکہ خدا نے اس کے یعنی اس کا تعلق کیونکہ اس کی روح کا اس کے اسپرٹ کا جائش کا تعلق جو ہوتا ہے نا گاڈ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آرٹ ورک آف آرٹ ہوتا ہے اس کے اندر اصل میں گاڈ کی پریزنس نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہم نے بات کی ہے کہ یعنی اس نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بتایا, پھر اس کے بعد نیچر کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, پھر اس نے اسپرچول ویلیو بار بار جو ہوتا ہے یہ دیکھیں گے کہ وہ اسپرچول ویلیو کو بار بار وہ بیان کرے گا. تو اس کو ہم آگے پھر اگلے لیکچر میں اگلی بات کو ہم کریں گے.